Yes. Sir, you are here? Can I? Yeah. Could I share the screen now? Shall I share it? Yes, sir. Wait, sir. I will make you. Yeah. Yes, sir. Now you can share. Okay. So we were on this slide, all right? Driver 4. Okay. So this is, we are talking about technology. I hope all others are connected here. Can I continue? Yeah. Okay. So the fourth part is the technology part. That is, the shift is from disconnected to connected. If you want to be a team player, if you want to involve others, if you want to involve the patient, their families, we need to be connected. So what is that? I'm going to talk about in the next slide. So technology is a simple way of life in the 21st century. The physiotherapy sector has historically been a late adopter of technology until now. So सबसे ज़्यादा late हम enter हुए हैं. But as I told you, the technology triage, I told you, no, the patients nowadays are e-patient. E-patient का मतलब equipped patient, enabled patient, empowered patient and engaged patient. तो आजकल के पेशेंट्स आर ऑल इक्विप्ड. हर एक के पास स्मार्टफोन होता है, हर एक के पास लैपटॉप होता है, फ्री इंटरनेट होता है. तो हम इसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज टेक्नोलॉजी को आप यूज करोगे तो आप जल्दी उनके पास पहुंच सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज का ऐप है. आप पहले तो क्या है कि पेशेंट को हम इनको क्लिनिक जाना है, इनको समझाना है, 10 बार समझाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, फिर भी इनको बार बार करा के सिखाते हैं. अब क्या है, आपके पास एक्सरसाइज का एक एप्लीकेशन है, उसमें उनका नाम एंटर करो, आप वहां जाके घर पे जाके आप फॉलो अप, उसमें इनको वीडियोस भी होता है, जीएफ का फोटोज होता है, हाउ टू डू इट, ये सब वो लोग अपने आप देख के चेक कर सकते हैं. दे कैन डू इट. एट द सेम टाइम यू आल्सो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट कैन हैव अ क्लोज वॉच. अगर आपने बोला 30 टाइम्स क्वाड्रिसेप्स ड्रिल करना है, काउंट आप रख के उसके थ्रू इनको कराने का चेक कर सकते हो. So technology trial, it is clear that there is more rapid change occurring in the consumer facing side of healthcare with the explosion of apps. And may I request others to please mute yourself. There is some voice coming over. Yes, please. May I request all others to mute it. Okay. Yeah. So technology trials take us to make the patient e-patient. So engage them, involve them. It is, in fact, this technology is covering all the other drivers also. Patient को center में रखना है, हम सभी उनको सारे चीज सिखाना है, इनको equip कराना है, enable कराना है, empower करना है, and engage करना है. So if you see, this is how the picture goes. The patient is here and he is connected to the physiotherapist, he is connected to the primary care physician. जैसे उनके पास ECG कराया, वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास ऐप के थ्रू आप दिखा सकते हो, वो सेम ऐप के थ्रू पेशेंट को भी दिखा सकते हो. कुछ एक्सरसाइज प्रोटोकॉल आपने दिया, उनका मोबाइल ऐप में वो डाउनलोड, उनको लोड करा सकते हो. द पेशेंट कैन डू दैट एंड यू कैन वॉच एवरीथिंग एंड यू कैन पास ऑन द इंफॉर्मेशन टू द कार्डियक सर्जन और द प्राइमरी केयर फिजिशियन. आप तीनों के बीच में काफी अच्छा इंटरेक्शन हो सकता है. इसमें आउटकम किसको बेनिफिट मिलता है? इट इज अल्टीमेटली द पेशेंट हु इज गेटिंग द बेनिफिट. दैट इज द driver 1 which I have talked about. So technology को सही तरीके से हम इस्तेमाल करना भी जरूरी है. Sir, yes please mute participants. अच्छा, I can do that because you are the host. Now you can mute. Yes, mute it. Yes, fine now, fine sir. Sir, you also muted. Unmute yourself. Yeah. Am I okay now? Okay, sir. Okay, sir. Yeah. I told you, this technology is a funny thing. You want it, at the same time you find it a problem. You have to be expert in knowing what to do and what not to do. Okay, it's an example of technology. So it is not that only physiotherapy you should be knowing. This is very relevant to the talk now. The example is that you should be aware of the recent advances in the technology. Thereby, you can involve the patient into it. So there is a good communication which should happen. So tomorrow when you are in a clinic, try to use all these applications, technology, so that the patient feel more empowered. These patients want such physiotherapists who are updated.
खाली हम मैनिपुलेट करेंगे, मसाज करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, पोजीशन करेंगे, ट्रीटमेंट दे देंगे, दैट इज नॉट अलोन इज नीडेड फॉर द पेशेंट. He want that he need to be empowered. चलो कब तक आप पर्सनली मैं आपके पास हर वक्त 200-500 रुपया देके रोज रोज आऊं? मुझे अपने आप को एम्पावर करो ताकि मैं घर जाके भी करूं, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, या हर हफ्ते 10 दिन में एक बार मैं आपके पास आऊं. पेशेंट wants such type of thing. So you can charge one time fees of 1000 rupees instead of charging 5 times 200 रुपया लेके 1000 रुपया करने के. एक ही बार बुलाओ, 1000 रुपया चार्ज करो, इनको सब कुछ सिखाओ. So इससे क्या है कि पेशेंट को भी लगेगा मैं एक ही बार आया, चाहे 1000 रुपया खर्च किया, मेरे को सब चीज मिल गया, मैं घर पे जाके भी मैं कर सकता हूँ. So that is very essential, and every visit you can increase your charges but give the best to the patient. So for that, nowadays technology is also equally important. Make use of that too. And the next driver, which is the last driver, that is the system, which I talked about in the beginning also, you know, system centered to patient centered. I'm coming back to the system also. System centered is not that good in the beginning because patient is left alone. But now the system can also be a better one, that is from fragmented to integrated shift. अगर system integrated हो फिर फायदा है, fragmented है फायदा नहीं है. Fragmented means pieces है, there is no connection between each other. That is a fragmented system which is not beneficial. Integrated system means they are integrated. Integrated in the sense where physiotherapy, surgery, yoga, postures, multiple gets integrated into it. So thereby the system काफी ज्यादा मजबूत है, उसके through patient को ज्यादा benefit मिल सकता है. So that is from volume to value we call it as. Volume to value means it is not that आपको number of patients बहुत सारे, जैसे here comes that more with less. You can spend less time but you can give the best thing. So आप value भी दे सकते हो, volume भी दे सकते हो. Most consumers know that their healthcare information from one institution and practice is not easily moved or shared with other. For example, आज गुजरात में मेरे पास एक पेशेंट है, उनको मैं इलाज करा रहा था, उनका हेमिप्लीजिया या पैराप्लीजिया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का. वो कल गुवाहाटी शिफ्ट हो रहा है, वहां पर जाके इनको फिजियोथेरेपी कराना है, लेट्स से एग्जांपल के लिए. बट प्रॉब्लम क्या होगा, अभी का सिस्टम में यहाँ जो हम कर रहे हैं वो गुवाहाटी में प्रैक्टिस नहीं होता होगा. जो सिमिलरली साउथ में, चेन्नई में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कश्मीर में नहीं प्रैक्टिस होती है. बिकॉज हमारे बीच में भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है. हर एक इंस्टीट्यूशन का पॉलिसी अलग है, हर एक हॉस्पिटल का पॉलिसीज अलग अलग है. इसलिए क्या है कि पेशेंट का कॉन्फिडेंस टूट जाता है. यहाँ पर जो मेरे को क्या मिल रहा है वो दूसरी जगह पर नहीं मिलता है, वो वहां जो दूसरी जगह पर मिलता है वो तीसरी में नहीं मिलता है. सो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, हमारे एटलीस्ट फिजियोथेरेपिस्ट, हम सभी एज एन, आजकल हम देखो, आप गुवाहाटी में बैठे हो, मैं गुजरात में बैठा हूं, बट हम सभी एक ही प्लेटफॉर्म में, बिकॉज ऑफ फिजियोथेरेपी वी आर टुगेदर. सो हम ये जो फिजियोथेरेपिस्ट, एटलीस्ट हम हमारे बीच में एक नेटवर्क बनाना है, हमारे बीच में एक सिस्टम बनाना है विच इज इंटीग्रेटेड. सो हमारे बीच में कॉमन, मेरी सोच आपकी सोच ऑलमोस्ट बराबर सेम हो जाता है, तो पेशेंट, यू कैन इमेजिन कितना बेनिफिट होगा. चाहिए वो यहाँ पर डॉक्टर हरिहर ट्रीट करूं या वहां पर अमूल्य ट्रीट करेंगे या XYZ ट्रीट करेंगे, पेशेंट का फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उनको जो मिलना चाहिए वो हम सभी एक जैसे देते हैं. सो it should not be focusing on the disease management and it should be focusing on the public health. We call it as individual health से public health, global health बात करते हैं. जैसे per capita expense एक इंडिविजुअल के ऊपर जो हम खर्च करते हैं, जैसे अभी कोरोना के लिए, वायरस के लिए हम अगर ओवरऑल वैक्सीन खर्च करने का कितना खर्चा होता है, वो फिर भी कम है जो अगर एक एक इंडिविजुअल को इलाज करने में. एक कोरोना पेशेंट आज एडमिट होता है तो उनके लिए कितना खर्च करना पड़ता है, मिनिमम 3 to 4 लाख हर एक हॉस्पिटल मांगते हैं. बट अब वैक्सीन खर्च करने के लिए 40 लाख भी, चाहे मान लो 1 करोड़ भी खर्च होता है, बट हमारा इंडियन पॉपुलेशन 140 मिलियन पीपल को 1 करोड़ अमाउंट इज नॉट अ बिग डील. सो इंटीग्रेटेड सिस्टम, फार्मास्यूटिकल कंपनी, एवरीबॉडी शुड कम टुगेदर. उसके ऊपर हमारा जो एक्सपेंडिचर होगा फिर भी बहुत 100 ही होगा, ताकि हमारे वॉल्यूम से हम वैल्यू दे सकते हैं. सो दैट इज द मोस्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्राइवर्स. सो what are the things that we need to remember? I am almost coming to the end of my talk. It is, I think we are managing with 45 minutes nicely. We are going on with the time. First is look at the person as a whole. कल हमारे पास कोई पेशेंट आता है नी पेन के लिए या बैक पेन के लिए, हमको खाली नी पेन या नी जॉइंट नहीं दिखना चाहिए, हमको सिर्फ फीमर, टिबिया, पटला नहीं दिखना है, हमको पूरा पेशेंट को देखना है. बैक पेन है तो खाली हमको स्पाइन नहीं दिखना चाहिए, पूरा पेशेंट को, बिकॉज अ पर्सन इज नॉट ओनली फिजिकल, ही इज हैविंग
psychological part, he is having emotional एक part होता है, and then he spiritual part होता है, social part होता है, cultural part होता है, हर एक का अपना अपना, an individual is combination of all these things. आपका इलाज तब फर्क पड़ेगा, useful रहेगा जब person को as a whole engage करोगे. That's more important. You need to understand his psychology. क्या देने में इनको फर्क पड़ेगा. जितना मर्जी आप मलिगन्स दे दो, बहुत अच्छे मैनुअल थेरेपी दे दो, बट अगर आप पेशेंट के आंख से आंख देके उनको अंडरस्टैंड करके उनको फैमिली उनका पर्सनालिटी देख के अपना समझ के नहीं करोगे तो वो पेशेंट का फर्क पड़ेगा नहीं. चाहे उसी वक्त पड़ा होगा, 2-3 दिन के बाद ही विल कम बैक टू यू. बट इफ यू अंडरस्टैंड द पर्सन एज अ होल एंड यू, अगर आप आधा घंटा आप इनके साथ इंटरैक्ट करो, गॉड हैज गिवन 2 years टू लिसन मोर. सुनना है, पेशेंट जो बोल रहा है बार बार अच्छे से सुनो और उनके हिसाब से इलाज करो. चाहिए आधा पौना घंटा, पहला सिटिंग में 1 घंटा भी लगता है, वो पेशेंट आपके हाथ से छूट के किसी और के पास नहीं जाएगा. That is the secret. You have to understand him. Develop a good personal rapport. Next, as I told you, equip, educate, engage the patient, enable the patient and empower the person. उनको पूरा इंचार्ज बना लो. You are responsible for your health. उसके लिए मैं फिजियोथेरेपिस्ट में आपके साथ हूँ. I am teaching you all these set of exercises. These are the lifestyle modification. ये आपको ergonomics ये करना है, सब कुछ इनको समझा के देख लो. You will be the best for him in his life. Next, most important, develop interprofessional team and involve the patient in important decision making process. Remember the word SDM, shared decision making. कल आप इनको कोई इलाज कराना है, इसमें किसी और को भी इन्वॉल्व कराना है, तो उनको साथ उनकी कंसेंट ले लो. आई एम गोइंग टू गो फॉर एन MRI फॉर यू, आई एम गोइंग टू टेक एन CT स्कैन फॉर यू. क्यों करना है, समझाओ इनको कौन कौन आपके ट्रीटमेंट में आएगा, क्यों आएगा, है ना. या फॉर दैट आपके लिए भी पता होना चाहिए कौन कौन प्रोफेशनल की क्या. जैसे वी हैव टू लर्न अबाउट अदर प्रोफेशनल्स, वी हैव टू work with other professionals, we have to be with about other professional. Okay, so you have to make a IP team. We call it as IP team. IP team means interprofessional team. आपके पास एक अच्छा एक टीम होना चाहिए. Next, go extra miles to bring smile. This is something. Extra miles means what? You are sitting in Guwahati, I am sitting over here. अभी हमारे बीच में एक miles हम कवर अपने एक मुट्ठी में हम आ गए. So जितना कर सकते हो पेशेंट के लिए, you have to go out of the way. इनको लिख के देना है या इनको WhatsApp के थ्रू फोटोज भेजना है, वीडियोस देना है, लिटरेचर्स देना है. Give him maximum. Go extra miles so that the patient smiles. And the last one is the most important, which is the area only exclusively for physiotherapist. इसमें ना सर्जन की रोल है, ना पीडियाट्रिशियन की रोल है, किसी और का नहीं है. Only physiotherapist. That is wellness, predictive care, preventive care, promotive care. You are an individual capable of foreseeing. किसी जैसे एस्ट्रोलॉजी जैसे है, आप इनको बता सकते हो आपको किसी ना किसी समय डायबिटीज होने का है, नी जॉइंट तो हो गई, सर्वाइकल जैसे आप भी फोन लेके ऐसे बाइक में जा रहा है, उनको आप बोल सकते हो. आपको ऐसे ही जाओगे तो 15-20 दिन महीने के बाद आपको नेक पेन तो टॉर्टिकोलिस तो हो गई. आपको बैठने समय स्लाउच्ड पोस्चर में बैठने का आदत ही ऐसे बैठने का, आप इनको प्रेडिक्ट कर सकते हो. you will be developing back pain. So you have to predict that, you have to prevent that, and you have to promote that. So if you understand this concept of wellness, I think you will be always asked, you will be remembered, and you will be one of the best clinical practitioner for the physiotherapy field. So that is all about what is these drivers. Because drivers, as I told you, there are a lot of drivers. You can refer in the internet. There are around 38 drivers. I have taken out 5 drivers, which is very, very important. And even in this 5, if you take one also, you are going to do the best. I have written my email ID over here. My WhatsApp number is there. If anybody have any queries you want to ask, you want to share, you can write it to me. You can WhatsApp me. And right now, if anybody is having any question, you can please ask. God bless everyone. Let's all be a humble and a highly responsible healthcare providers in this changing era of health scenario, right? So yeah, you can, anybody wants to talk to me for any questions, you can unmute yourself and talk to me. Over to Amulya. Yes, sir. Thank you so much. Very informative session. Thank you. Thank We you. are really grateful. So any participants have any question, you can ask Dr. Harihara, sir. We have with us our... Hello? Yeah. Am I audible, sir? Yes, yes. We have yes. Dr. Pooja Sekya, ma'am, our advisor, Physio Mansa. We welcome you, ma'am. Okay. Dr. Pooja, ma'am, you're here? Hello, Amulya, can you hear me? Yes, yes, ma'am. Hello.
Yes, Yeah, ma'am. thank you. Yeah. Yes, please. So I guess what exactly is wanted. I just saw the group chats also, and almost the thanks message and the message. I guess you have understood what it is. It's not a very tough. And it is all about personality. It is all about understanding what a physiotherapist is be. So only problem is the one which is easy to understand will not be followed. हम follow नहीं करते हैं. आज के लिए अच्छा रहेगा. एक दो दिन को follow करते हैं. तीसरे चौथे दिन हम routine practice में चले जाते हैं. कोई बड़ी बात नहीं. So I request each one of you or all present here for this webinar to take forward this few drivers in your lifetime so that you can be a physiotherapist. And I'll be glad to hear from you that you are much needed in the society as a great healthcare provider and professional. Thank you. Thank you, sir. We are really grateful that out of Thank your you, sir, busy schedule, you for gave sharing us this time. valuable knowledge, sir. Thank you. So, if anyone have any question, Thank you so much, sir. yes, Joyanta, you can carry on. Yes, Joyanta, you can carry on. Thank you for today. Knowledge. Thank you so much. Yes, sir. We can end now. Yeah. Okay, sir. Thank you so much for your time, for sharing knowledge with us. Thank you, sir. Thank you. All the best and good luck to everybody. Take care. Stay safe and be safe. Thank you. Thank you, sir. Thank you.